हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम देखेंगे कि उनका यूज़ क्या होता है, उनके एग्जांपल्स। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, उनके यूज़। और वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So let's start the video. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो here are the examples too, but before solving this activity, let's recap what is verb. So verb क्या होता है? बेसिकली हमें कोई एक्शन को दिखाना हो तो हम वर्ब बोलते हैं। एन एक्शन वर्ड इज़ नोन एज वर्ब, मीन्स हम कोई क्रिया कर रहे हैं और वो क्रिया दिखाने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। द बैटर हिट द बॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, द बर्ड सैंग। What is the difference between the two verbs in the above sentence? At first thought, you may say the definition but forgot about the meaning. Instead, concentrate on the grammar. How do the verbs differ grammatically? Notice the first sentence has two words following the verb hit. The second sentence does not have word after the verb sang. These two facts lead us to discussion on intransitive and transitive verbs. So ये जो दो सेंटेंस है उसमें पहला वर्ब हमें कौन सा दिख रहा है? वर्ब इज इन फर्स्ट सेंटेंस आवर वर्ब इज हिट एंड सेकेंड सेंटेंस वर्ब इज सैंग। ओके, सो जो हमारे दोनों वर्ब हैं उसमें फर्स्ट एग्जांपल में बैटर हिट द बॉल, जो हमारा वर्ब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हमारा सेकेंड एग्जांपल, द बर्ड सैंग इज नॉट फॉलोइंग एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो with the help of this example you can little bit understand what is transitive and intransitive verb. So for understanding more, let's see what is transitive verb. So what is a transitive verb? Transitive verbs are action verbs that have an object, person, place, thing. To receive that action in the first sentence from the previous slide, the direct object ball received the action of the verb hit. तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और एक्शन वर्ब को ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज पर्सन, प्लेस और थिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टू रिसीव दैट एक्शन, हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो द बैटर हिट द बॉल, उधर बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था एंड वो इट वाज फॉलोड बाय द वर्ब हिट. So transitive verb is basically the verb which is followed by an action word and also transitive verb shows the complete sense of an sentence. Let's see the examples here of transitive verbs. He baked some cookies. She rode the bike. They ate ice cream. All of the verbs in the above sentence are transitive because an object is receiving the action of the verb.
सो जैसा कि हमने इधर देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, आर रिफर्स टू एन एक्शन वर्ड, और दैट हैव उन्हें वो ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. सो इन एग्जाम्पल्स में सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऑल्सो एक्शन वर्ब्स आर देयर. इन फर्स्ट सेंटेंस baked is an action word, second road is an action word, third ate is an action word. So this all verbs are followed by an direct object. Here some cookies are direct object, the bike is direct object, ice cream is direct object. So let's see. But what about the sentence from the previous slide? The bird sang. Is the verb in that sentence a transitive? Was it transitive, guys? No, it wasn't. It wasn't. No, it was not transitive, because as we seen here, the transitive verbs are action words that have an object. उन्हें object होते हैं and objects of person, place or thing, and transitive verb presents a complete sense of a sentence. So it was not transitive. No, it was not transitive. No, in this case the verb sang is an intransitive verb. So transitive नहीं होगा तो intransitive होगा. So let's recap what we learnt in transitive, and after that we'll see what is intransitive. So transitive verbs are action verbs. Action verb होते हैं, उन्हें object होता है, वो भी direct object of person, place or thing. To receive that action, we receive that an action with the help of two verbs. I will tell you one trick to identify in a sentence whether the sentence is transitive or intransitive. हम पता लगा सकते हैं कैसे कि वो सेंटेंस ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, बाय क्वेश्चनिंग द वर्ब विथ व्हाट एंड होम. ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों जो वर्ड है, अगर ये क्वेश्चन हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो सेंटेंस है उससे हमें आंसर मिलता है इन दोनों वर्ड का, तो एब्सोल्युटली वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है. और ऑन द अदर हैंड if we use these words to question intransitive sentence, we don't receive the answer of these words. So let's see with the help of these words, and let's question this sentence whether it gives us the answer or not. He baked some cookies. What he baked? He baked some cookies. First answer we got. And second one, what's the question? Whom? Who baked some cookies? He baked some cookies. So we got both answers of the question. Second example, she rode the bike. Who rode? She rode. What rode? The bike rode. So we got the answer of what and whom. The third example, they ate ice cream. What they eat? Ice cream. Who eat? They eat. ओके, सो हमें इन व्हाट एंड हुम का आंसर इन तीनों एग्जाम्पल से मिला. सो दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो लेट्स सी व्हाट इज intransitive verbs. Intransitive verbs. Intransitive verbs are action words but unlike transitive verbs, they do not have an object receiving the action. Notice there are no words after the verb sang. तो intransitive verb भी action verb होते हैं transitive verb जैसे, पर ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, बट
on other hand, transitive verb do not have an object receiving the action. ना तो उन्हें ऑब्जेक्ट होते हैं और ना तो कोई एक्शन रिप्रेजेंट होता है. एंड ऑल्सो द intransitive verb does not make any complete sense of a sentence. So in first slide we have seen two examples. The first was the batter hit the ball and the second was the bird sang. So first example was transitive, the second one was the bird sang. So sang was the verb, and sang was not followed by a direct object, so it is not a transitive verb, it is intransitive verb, as we discussed earlier. Let's see examples. I fell, he laughed, the sun set, I cried. So any action verbs are not there. Also these examples do not have object receiving the action. In sentences में कोई action भी नहीं है, means कोई object नहीं है और न तो कोई action हमें प्राप्त हो रहा है. और from these examples not a complete sense is represented. In all of the above cases, the object is performing the action of the verb and nothing is receiving the action. So in the above cases, the subject is performing the action of the verb and nothing is receiving the action. तो इधर जो verb है जो हमारे subject है, I, he, the sun, I, ये काम कर रहे हैं वर्ब का. और इन जो एग्जांपल्स में से हमें कोई एक्शन नहीं मिल रहा है और ये इंट्रांजिटिव कोई एक्शन वर्ब हमें मिल रहा है क्या इन सेंटेंसेस से? नो, we are not getting any action verb. And also does this examples have any object? No. So these are intransitive verbs. And as we seen that transitive verbs को अगर हम what and whom से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिलता है. And on other hand, if we question intransitive verbs by whom or what, the answer will not get answer. So we will be able to understand which is transitive and which is intransitive. So let's recap. A transitive verb must be an action verb plus there must be an object to receive that action. And transitive verb is when there is an action word but an object does not receive the action. तो transitive verb action verb होता है, we know that, but also object होना चाहिए जो कि हमें कोई एक्शन बता रहा हो. ऑब्जेक्ट होता है पर अगर वो हमें एक्शन बता रहा हो तभी वो ट्रांजिटिव होता है. और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन वर्ब होता है बट object भी होता है. we also get object in the sentence but that object does not give us any action. It does not give any type of action. Transitive verb is followed by direct object. Transitive verb, direct object. And intransitive verb is followed by indirect object. So in simple, अगर सिंपली आप देखें तो जो हम कोई सेंटेंस है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फॉलो हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो नहीं हो रहा है फॉलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और एनी टाइप ऑफ एक्शन इज नॉट देयर इन द सेंटेंस, सो इट इज intransitive verb as I told you earlier. Let's see some examples. You will understand better. She was crying all day long. Intransitive verb. Why? Was crying all day long. We have the object, but we have the object does not make any sense. Any action is not done by the object.
सो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. और मैंने जैसा आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम वॉट एंड हुम से क्वेश्चन करें तो आंसर नहीं, कोई भी आंसर नहीं आएगा. आंसर आएगा तो वो कंप्लीट सेंस नहीं रिप्रेजेंट करेगा. और वहीं हम ट्रांजिटिव वर्ब को क्वेश्चन करें तो वॉट एंड हुम से तो आंसर हमें मिलेगा और वो भी कंप्लीट सेंस में. लेट्स सी अदर एग्जांपल्स. We showed her the photo album. Transitive verb, because if we question by what and whom, what she showed the photo album to whom, to we. So it's transitive verb. The doctor advised me to exercise regularly. What the doctor advised? Doctor advised to exercise regularly. Whom advised? To me advised. So it's transitive verb. It was raining at that time. So let's question by what and whom. Does we get any type of answer from this intransitive? It was raining. What was raining, or whom was raining? Does it make any sense by this sentence? It does not make any sense, so it is intransitive verb. Fifth example, she laughed at the joke. What she laughed or whom she laughed, does it make any sense, guys? No, it does not make any sense, so it's intransitive verb. She gave a cookie to the child. Whom she gave the cookie? To the child. What she gave? She gave the cookie. So it's transitive verb. They slept in the street. What they slept or whom they slept, it does not make any sense. Does not make any type of sense. So it's intransitive verb. I ate the cherries. What I ate? Cherries. And who eat the cherries? I eat. So it's means in a transitive verb. My father does not drink coffee. What my father does not drink coffee. And who does not drink coffee? My father. So it's transitive verb. He always keep his money in a wallet. What he keeps in a wallet? Money. Who keeps? He keeps. So it's transitive verb. Hope you understand what is transitive verb and intransitive verb. Transitive verb is is an action verb and is followed by an object. And object gives us action of place, person or thing. And intransitive verb is is action verb and has object but does not give any action. So intransitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फॉलो हुए होते हैं. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट एक्शन रिप्रेजेंट करता है. इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है बट ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव अस एनी एक्शन. सो इट्स intransitive verb. To identify in a sentence which is transitive and or not transitive, one trick is there. As I have told you earlier, question by what and whom. If you will get the answer, it's intransitive. It's transitive, sorry guys, it's transitive. And if you don't get the answer by questioning with the help of what and whom, if you do not get the answer, it's intransitive verb. होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Meet you in the next video with a new topic.